योगी सूरजनाथ गुरु बुधनाथ जी गोरख शब्दी के साथ विद गोरख सबदीज द शेइंग्स ऑफ गोरख नाथ। शब्दी नंबर 5 हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्टीकरण के साथ। अलख बिनानी दोई दीपक रचिलय तीन भवन एक ज्योति तास bicārata त्रिभुवन sūjhai cuṇilyau मानिक motī। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Suraj Nath. The alakh vigyani shines light on duality. Throughout the 3 words, one light. Meditating on it, the 3 words appear. Go gather rubies and pearls. सिंपल शब्दी। इसके पहले की एक्सप्लेनेशन इन हिंदी सादी शब्दी। इसके पहले की शब्दी नंबर 4 की ही आगे गति। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है अलख बिनानी, अलख और अलख बिनानी दोई, और दीपक की रचना, दीपक प्रकाश, किसी चीज़ पर प्रकाश डालना, 3 भवन, और इस तरह से जो यथाभूत है। अलग संज्ञान मतलब ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता, अलख का इतना ही अर्थ है। मन ताजगी, फ्रेशनेस के साथ, ताजगी के साथ होता है, और ज्ञात से मुक्त हो, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर वर्तमानता उसमें समाई होती है। ज्ञात से मुक्त हो आप, वर्तमानता में होने से ही आप ज्ञात से मुक्त होने का अर्थ है, एक उसकी सेंस है। वरना आप ज्ञात में ही होना लाजमी है, जो मन का स्वभाव है। इतना सहज सादी बात है। जब ज्ञात से मुक्त अलख विनानी, अलख संज्ञानी होना है, ज्ञात से मुक्त होना है, तो विनानी विशुद्ध ज्ञान से होना है, मतलब वर्तमानता से होना है। बार बार वर्तमानता में आकर कुशलता से जीना है। वर्तमानता की कुशलता, विचार वर्तमानता की कुशलता कभी नहीं समझ सकता। एक कीटों का गुंजन, आसपास में चिड़ियों का गायन, कीटों का गुंजन चल रहा है, जो अपने आप से सुनाई दिया जा रहा है, नाद। तो उसको हम सहज रूप से सुनते रहेंगे पल पल। सोचना नहीं पड़ता, सोचने से वो काम नहीं हो सकता। सोच विचार बैक रखना होता है, विचार करने वाला इंद्रिय बैक। तो फिर उसके प्रति हम जो दिखता है, आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, इंद्रिय अपना काम करती है। उस तरह से विचार करने वाला मन भी चटरिंग अपने स्वभाव से चलती जाएगी, उसको हम महत्व नहीं देंगे। बाकी इंद्रिय चेतन, सारा मन चेतन, वर्तमानता के साथ, समग्रता के साथ, मतलब शून्यता। इस तरह से गोरख की, बुद्ध की जो शून्यता है वो जीवंत है, वो शून्यवाद नहीं है। नागार्जुन जैसी, शंकराचार्य, वेदांत शंकराचार्य जैसा शून्यवाद नहीं है। वो विचार की शून्यता के बारे में, शून्य के बारे में विचार की बातें नहीं है, वो वास्तविकता, जीवंतता है। इस तरह से अलख विज्ञानी शून्य चेतना से, शून्यता से जीता है, होता है। और वो वर्तमानता, जो सारा जगत जो है नाम रूप, वो द्वयी में चलता है, द्वैत में चलता है। उत्पाद व्यय, वेदना भावनाओं की हर चीज़ की तरंग, उत्पाद व्यय धम्मिनो, जैसे बुद्ध कहते हैं। या राग द्वेष, अराइजिंग पासिंग, क्रेविंग अवर्शन, ये द्वयी है। वेदना का उत्पन्न होना, नष्ट होना, भावनाओं का उत्पन्न होना, नष्ट होना, विचारों का उत्पन्न होना, नष्ट होना, बदलते जाना, बदलता। तो इस तरह से द्वयी में ये वर्तमानता, अलग संज्ञान के साथ वर्तमानता, उसमें अपने आप से बोधि का जागना होता है। उसे शून्यता कहे, कालातीतता कहे, पन्या कहे, प्रज्ञा कहे, बोधि कहे। उस बोधि का प्रकाश जब इस द्वैत पर, नाम रूप पर, राइजिंग एंड पासिंग, उत्पाद व्यय पर, वेदना भावनाओं पर
राग द्वेष भी भाव है, क्रोध भीति जैसे उनके ऊपर जब वो प्रकाश के ध्यान की बोधि के प्रकाश में जब वो आते हैं तो उनकी निर्जरा है, कुदरत का कानून है, कुदरत के नियम है, अस्तित्व के नियम है, निसर्ग के नियम है। 3 भवन एक ज्योति, जो भी 3 भवन हैं, 3 लोक है, विचार तृष्णा जगत, उसके परे विचार तृष्णा इस घटपिंड का हिस्सा होते हैं। सो विचार तृष्णा जगत के बाद दूसरा जगत जो है वो हमारा बॉडी माइंड एज ए होल, शरीर घटपिंड की समग्रता, और तीसरा सारे नाम रूप की समग्रता, जिसका ये बॉडी माइंड घटपिंड और विचार तृष्णा हिस्सा होते हैं। ये तीनों एक साथ जुड़े होते हैं, अलग नहीं होते हैं, और इनके ऊपर शून्यता के अलग संज्ञान के साथ बोधि की अग्नि, बोधि का प्रकाश, इनकी नाम रूप के अपने भीतर से भाव पाना चैतसिक स्तर पर निर्जरा है, अहम का मरना है जो मीठा है। tāsa bicārata tribhavana sūjhai. Inquire into this. All the 3 words get unfolded and psychologically they're ending, emptying. उनकी निर्जरा अहम का मरना, मीठा मरना. Tāsa means meditating on it, the 3 words appear. तीनों लोकों की सूझ प्रकट होती है। इतना ही नहीं, चैतसिक स्तर पर कोई अपने आप से गणितीय फिजिसिस्ट या डॉक्टर बन जाएगा ऐसा नहीं है, मगर चैतसिक स्तर पर सीख होती है, सीखना होता है जीवन गति का, और ये सारे भुवनों की और उससे भी परे नाम रूप के जगत के सारे नाम रूप के स्तरों की पर्दा तर पर्दा निर्जरा चलती है तो सीख चलती है, सीखना होता है, अंदरूनी सीखना होता है। और उससे भी परे बोधि का जागना, बोधि की अंतर समझ होती, शून्यता की अंतर समझ होती है। cuṇilyau मानिक मोती, कई बातें प्रकट होती जाएंगी सहज रूप से जीवन के रहस्य प्रकट होते जाएंगे, जीवन में गहरा ना होगा। cuṇilyau मानिक मोती. So some explanation in English. In this sabadi, this is the continuation, this sabadi is a continuation of the last sabadi number 4, and in this sabadi, the words alakh, binā, alakh means lakhana, to see. So lakh, having seen, so that is past, known, data, memory, feeded in thing that is feeded in memory, so past, and thinking on the basis of past, thought goes on the basis of past. Without past as a basis, thought cannot continue, thought cannot go on. So alakh is freedom from that past data, freedom from thought, thinking process, by knowing its place in daily life and its limits psychologically. So freedom from the known, that is the alakh or the alakh sense, implies presence of the mind. Presence of the mind towards what? What is happening within and around. We sense, we feel life and its movement through the senses in or on the body. So when we are on the body, in the body, knowing its movement, what is happening in it, that is sensations, vibrations, feelings, expressions, then we are in the present. Otherwise we are bound to be in thought. So simple. So simple. So this presence and itself, it is, when thought is kept back, this presence is wholeness of the mind, moment to moment awareness, again and again coming to it. So this itself is emptiness. So alakh sense or the alakh sangyan, freedom from the known by knowing its place and limit, implies presence, that is wholeness of the brain mind, that is emptiness, and that is being so present, being so in the presence is vigyani, vishuddha gyan, pure knowledge, choiceless pure awareness. This itself is, presence itself is light. Presence itself is to live by presence, so with to live so with presence is itself light, awakening of light of bodhi. And this light, on what it shines, this light shines on this duality of the name and form, that is what we are, rising and passing of vibrations, sensations, feelings, or craving and aversion, raga, dvesh, and all this form, name and form, moves in this duality of arising, passing, of craving, aversion, of more or less, of right or wrong, of good or bad, or pleasing or paining, like this. So this light of presence
all this duality of the name and form, arising and passing of sensations, craving and aversion, whatever that moment is, it comes in the light of presence, and so that is in the light of emptiness, body, presence, and in that there is the ending of that name and form psychologically of that vibration, sensations, that duality is being ended. Duality doesn't become one, it is dissolved, it is ended, emptied, transformed into bodhi or intelligence, into nothing. And all these three words, this light of presence works on all the three words, tīna, bhavana, jotī. Throughout the three words, one light, that is the light of presence of the mind with the alakh sense. And with this presence of the mind with the alakh sense, which is pure knowledge, binā, vigyani, which itself is light of bodhi, inquire with this, meditating on it, inquiring by this. The observation is itself inquiry, with diligence and skill, being aware of breathing, being aware of these senses, and being aware of this thrilling sound of insects, of singing, of birds, whatever is happening within and around. You look, this is very important to understand that we feel life through the senses on or in the body, and if we are in or on the body with what is happening in it, we are in the present. Otherwise, we are bound to be in thought in past or future. And there are only two potentials in our psyche, body, mind as a whole, and that potentials are, one is thought or thinking, the other is attention or attending. Presence of the mind is attention or attending. So it is only in our hand either to live by thought and time or by the presence. Understanding the presence in itself. Otherwise, thought dominates presence. We walk by presence, we drive our car by presence, but thought is dominating. So this is a fundamental click shift in the consciousness. To live by presence is nothing. Thought is something, right or wrong, good or bad, more or less, pleasing or paining, etc. Valued. Presence is no value, invaluable. So, and it is, thought cannot understand what the significance of presence is unless we live it, and there is by knowing the place of thought and day-to-day life and its limits psychologically. So getting clear from thought while using thought as needed, despite chattering, when we come to presence, feel life with skill and diligence, then we are bound to get insight into what the significance of presence is, that immense significance. Thought is infinite, but presence is immense, no measure. Thought is measure, infinite measure. Suspended thought, zero thought is also suspended thought. Thought could be speeded up, slowed down, or suspended, and suspended thought is not emptiness. It is a kind of emptiness, not emptiness per se. It is samadhi shunyata, not bodhi shunyata. The shunyata, emptiness of bodhi, and the emptiness of samadhi are fundamentally different. Samadhi shunyata is attained by this thought thinking process by slowing down to itself, while the shunyata of the presence of mind per se by knowing the place of thought in day-to-day life and its limit psychologically. So freedom from thought and coming to live in the present again and again, skillfully, diligently, knowing, just observing, focusing on the moment of life. In that, all our mind, all the three words, nature of this thought and desire, nature of this body, mind as a whole psychologically, and the nature of this name and form as a whole, so of which this body, mind and this thought and desire are parts, is revealed. Meditating on it, on the light of that, with the alakh sense, presence of the mind, that is bodhi, emptiness, intelligence, the three words appear. Go gather rubies and pearls. Life unfolds by itself. You awake to mysteries of life, simply. And presence is nobody's monopoly. Nobody can store it like thought. Thought can be stored. This knowledge, this subject, that logic, etc. Okay, all right, good, we respect that. That has its place. But it is always thought, or the knowledge is always in the shade of ignorance, because it is ever incomplete. Presence is ever complete. So wholeness,
and emptiness are one and the same thing. Go gather rubies and pearls. The alakh vigyani shines light on duality throughout the three words, one light of the presence of emptiness, with skill and diligence, meditating on it, inquiring in this. The observation is itself inquiry. That is meditating is. This meaning of word meditation is taken as presence of the mind, and also sometimes it is taken as some to think on something like that. So inquiring into it, meditating on it, the three words appear, mysteries of life unfold. Go gather the rubies and pearls. This is it.